इसमें जो 3 रिलेशनशिप हैं उनमें से है एक है वन टू वन रिलेशनशिप क्या है? दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप डिफाइंस दैट अ रिकॉर्ड इन वन एंटिटी कैन बी connected to only one record in another entity. This is not a very common type of relationship because the data from related entities can directly be placed in a single entity. However, this type of relationship is used to divide larger entities into smaller ones. Then second है one to many relationship. This type of relationship defines that a record in one entity can be connected to many records in another entity. This is the most common type of relationship used in relational databases. This relationship can also be seen as many to one relationship. So third one is many to many relationship. In this type of relationship, one or more records of one entity are connected to one or more records of another entity. Usually a third entity known as junction table is used to create the database system या इसको मैनेज करने के लिए जंक्शन टेबल की एग्जांपल आपने बुक में भी देखी है, पिक्चर बनी हुई है पूरी फिगर, उसमें आपने देखा था कैसे क्लास, टीचर, स्टूडेंट और फिर टीचर क्लास सारे जो टेबल्स हैं उनको कीज के थ्रू कनेक्ट किया हुआ, तो इसमें जंक्शन टेबल पे था। क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन कीज। तो प्राइमरी कीज क्या है? अ प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन एन एंटिटी। When a primary key is applied to any attribute in an entity, it forces the rules of primary key onto that attribute. ठीक है, एट्रीब्यूट क्या है? जब हम कोई एक स्पेसिफिक टेबल बनाते हैं वो क्या है? वो एक एंटिटी है, उसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, वो फील्ड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, उसको डिनोट करने के लिए यानी उसकी डिफरेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए की बनाई जाती है प्राइमरी की। तो इसके रूल्स हैं कि द एट्रीब्यूट यानी कि फील्ड मस्ट कंटेन अ यूनिक वैल्यू टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। अ यूनिक वैल्यू मीन्स दैट two records in the same entity cannot have the same value stored in this attribute where primary key is applied. और second one है rule, the value of the attribute where primary key is applied cannot be null. फिर next है foreign key. A foreign key is used to define the connection or relation between two entities. ठीक है, जहाँ पे relational यानी कि कनेक्शन बनाया जाता है ना, वहाँ पर फॉरेन की अप्लाई की जाती है। फॉरेन की one of the entity is configured to be connected to the primary key of another entity. When a foreign key is applied on an attribute, it enforces that the value for that attribute should match any record in the related entity having a primary key. Thank you for listening.